Make sure the screen is visible to you and I'm audible to you. If it's so, please put a message in the chat box so that I will know. क्या बात, आप सबकी अटेंडेंस बहुत कम हो चुकी है? Why it is the lecture is feeling boring to you? Any kind of issue with the teaching? Any kind of issue with the topic and all? या अभी आप लोग माइग्रेट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, शिफ्ट कर रहे हो स्कूल से, या फिर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? Why the attendance is getting low and low each and every day? Sakshi, any idea about that? Vaishnavi, Mehak, any idea about that? Why the attendance is getting low? Sanjana, Mehak, Sakshi, Vaishnavi. Do you know each other actually? Sanjana, Vaishnavi, Mehak, Sakshi. Do you know each other? Are you being from the same school? Okay, got it. Okay, it was raining a lot yesterday. Oh my goodness. And here's the heat wave is severe heat wave alert is being in my area. Severe heat wave. And it actually is. There is a very critical heat that is being outside. People getting sick. They are getting trouble with that, getting dehydrated. There is very worst condition here. Vaishnavi, you are the lucky one. Yeah, I also think so, man. Because lecture wise, I put my total potential here. So I think there would be some network issue and all. There might be some personal issues, and we cannot say anything about that. Yeah, but still, these four girls I have in the lecture sufficient. If one student is present now, you can check my previous YouTube lectures on Avanti Live. If one student is there, if 10 student is there, the same potential, same delivery rate, same motivation. Any kind of questions you want to ask? Any kind of question, like you are being curious about. कुछ ऐसा है जिसके बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे लेकर के, या फिर सब्जेक्ट को लेकर के? एनीथिंग इन योर माइंड, जस्ट टॉक टू मी. Because by the end of this month, there will be a gap of at least 28 days for the classes. Okay, so I'll be on leave then up to 24th of June. The class would be running up to 31st of May. Okay, so I am keeping this session very light and want to talk to you that how you have feeling about the lectures, because we are doing this for at least 2 months, na? So we have spent a lot of time with each with together, है ना? So I just want to know ki how do you feel, and is the lecture seems
pretty easy for you, or I should be keep the level of lecture a little bit higher, a little bit lower, or too high or too low. So what's your opinion on that case? I just want to know. Then I'll start the lecture. Any one of you can ask. Any one of you can participate in it. So this HackerX, you are Tushar, na? Your name is Tushar, na? HackerX. So what's your name? HackerX? I think this is not your name. Sabrina. Oh, I just forgot. I just forgot. How to get PYQs for JEE? देखो, there is a website, very good website, where I also visit several times. And the website is www.examsite.com. There you find all the PYQs of related to NEET, JEE, MHSET, CUET, KCET, all the types of engineering entrance exam, UPSC civil service exam PYQs is also there. Engineering services exams like GATE, all the branches related to GATE, all the PYQs are there. And for you, JEE and JEE advanced numericals will be there. Okay. Got it, Sakshi? Exam side is the website. Okay. It's free of cost, although there are little bit of ads there, but you can avoid that. And very good website. Now, don't need to thanks. Now, let me just start recording this session. Good afternoon, everyone. I welcome you all in this session of moving charge and magnetism. This is lecture 4. And in the previous lecture, we have did that how to find the magnetic field around. Okay. Do not worry, Sakshi. I am here to help you about anything. Okay? Do not worry about that. If you want them in PDF form, I will also share that in group. Okay? But it is up to 2021. So for that 21 to 24, you have to shift to yourself to the website. Okay? Yeah. So PYQs in terms of uh, PDF format, I will not recommend you because it's better if you buy PYQ book, because the experience that you will get, your sensory action will more active when you read book physical format. Okay? When you read any hard copy of that particular material, then the sensory action, because you touch that book, you turn the pages with your fingers. Okay, your eye movement will be there, and there is a benefit of for your eyes also. Got it? That is why I'm not recommending the PDF, although I will share it
and I have also recommended the exam site website. But please buy a book of PYQs। अरिहंत की आप बुक ले सकते हो, PYQ 33 years की। ठीक है। या Amazon पे आपको, Amazon पे अवेलेबल हो जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल। गॉट इट। बट पहले अभी ये नहीं है कि पहले बुक मंगा के रख ली फिर उसे पढ़ भी नहीं रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू, इट्स फॉर ऑल, फॉर मी ऑल्सो। So पहले you will make the habit to start solving the PYQs from exam side. You can do that, and the PDF that I will share on the group, from there you can do that at least 10 question per day, or 15 question according to your strength. You can do that. And then when you feel ki okay, now I am getting into this habit, then you bring the hard copy, try to solve it. Okay. This is the website, na? This is the website. This is the website, exam site. Okay. Okay. So in the previous lecture, we have much more talk about the magnetic field. Magnetic field due to a current carrying conductor, triple C you can see, and a circular loop. Okay. I hope that you have revised that concept. Okay. Now, if I just give you an idea that what kind of question that can be put on from these topics. So the very first question is that this is the wire, okay, and the point P is here, okay, and this particular angle is given as 60 degree. This particular angle is given as 30 degree. Now find out, this is the value of current inside it. Then what is the magnetic field due to this? Can anyone tell? And you will keep mu naught upon 4 pi as K. ठीक है, so if it is coming out mu naught I upon 4 pi k, so your answer will be ki. If it is coming 2 mu naught upon 4 pi, so your answer will be 2ik. So keep your answer in that format so that you can write this in the chat box also, because it is very hard for you to write mu naught upon 4 pi in the chat box. So Sakshi and all of the other present here, Sanjana, Vaishnavi, Mehak, please try to solve this question that I have given in you. Vaishnavi, Sabrina, try to solve this. Giving you 1 minute to solve this question because it is not worth than 1 minute. Okay, try to solve this. The formula that you are going to use is, देखो अब तो मैंने और भी आसान कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, नाउ फाई वन एंड फाई टू की वैल्यू यू हैव टू पुट इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, गॉट इट। Anyone find out the answer? Okay. So here mu naught upon 4 pi we would consider as k I sine phi 1.
So phi 1 के लिए you have to move in the direction clockwise direction. But to this cover this 30 degree, you have to come downside. I have told you because the P is not in the alignment of this line charge. Okay. So that is why this 30 degree will be kept as minus 30 degree. So it will become sine 60 minus sine 30. Okay. So B here would be K into I. Sine 60 is root 3 by 2. And this will become sine 30 is 1 by 2. So it will become root 3 minus 1 by. ठीक है, क्लियर है? दिस इज द आंसर. सभी का यही आंसर है? साक्षी, संजना, एनीवन? प्लीज रेस्पॉन्स गाइस. ओके, नाउ one question we will do. One question we will do from the formula of the ring. ठीक है, रिंग से हम एक क्वेश्चन करेंगे. एंड व्हाट इज दैट? हियर यू हैव a circular arc, and here you have to find out at this point P, you have to find out what is the value of magnetic. The radius will be R and 2R. ठीक है, now try to find out. And the current will be like this in this direction, and in upper part is in this direction. किसी को कोई डाउट होना तो तुरंत पूछ लेना अभी. ठीक है, बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जामिनेशन में. हैज एनीवन सॉल्व्ड इट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू कैन यूज टू फॉर्मूलाज. एक तो मैंने कल ही आपको बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा. एक तो ये फॉर्मूला था. दूसरा फॉर्मूला क्या था? अब ये किसका पार्ट है? एक कंप्लीट रिंग का पार्ट है. एंड रिंग के सेंटर पे ये फील्ड पूछ रहा है. रिंग के सेंटर पे जब ये फील्ड पूछ रहा है तो हमने कल निकाला था ना, सेंटर पे फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. यही थी ना? दिस इज व्हाट वी हैव फाइंड आउट इन द प्रीवियस सेशन. किसी को याद है भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, नॉट पाई आर. ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. अब आप में से बहुत से लोग क्या गलती करेंगे ना इसमें, हमने कल ये फॉर्मूला निकाला था फॉर अ कंप्लीट रिंग. ठीक है, बट ये रिंग तो कंप्लीट नहीं है, ये तो हाफ है, सेमी सर्कल है. बट वी कैन से दैट सेमी सर्कल का सेंटर और इसका सेंटर भी तो सेम ही होगा. नो, सेंटर दोनों के सेम होंगे लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे हाफ ही तो पोर्शन है जो आप यूज कर रहे हो. हाफ पोर्शन इज नॉट देयर. So due to this half portion, whatever the magnetic field is absent here. ठीक है, so you cannot use this formula, this one. ठीक है, so what formula we are going to use? Due to arc. So this is a semicircle. What angle is subtend at the center? Can anyone tell? Look guys, this is for you, so you have to answer. Okay. 180 degree. Very good, very good. Both the arc will make an angle 180 degree. Okay. And one thing more I want to ask you. Very good, Vaishnavi. Very good, Mac.
that is the direction of magnetic field at point B due to these two arcs will be in the same direction or in the opposite direction. I have told you that how to find out the magnetic field. Whenever you get a curve line current, na, current is going in loop. So just curl your finger, right hand finger in the direction of loop. The direction of thumb gives you the direction of magnetic field. So you can do the same here. If you do it for the lower curve, the lower arc, the current is in the clockwise direction. Okay. So for the lower arc, this one, the current is in the clockwise direction. Clockwise direction में you curl your finger, so your finger thumb is going inside. Okay. Which means due to this lower arc, field is inside. And if you see for this upper arc, the current is going anti-clockwise. So anti-clockwise, curl your finger, the thumb is going outward. Which means due to this bigger arc, the magnetic field is outside. So the both the field will be opposite to each other. And we have to minus them. Okay. Because they follow the principle of superposition. So when net field we will write here, we will write according to the vector notification. Okay. And according to vector, these vectors are equal and opposite in direction. So they will be subtracted. Okay. So due to this lower arc, if you put it here, mu naught I upon 4 pi small r, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे फॉर दिस लोअर आर्क 180 डिग्री और 2 पाई सॉरी और पाई एनीवन 180 डिग्री पुट करेंगे या पाई वेरी गुड साक्षी एनी एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम वैष्णवी महक संजना नो नॉट एनी नो I have told you in the previous lecture that you must have to put the value of angle in pi, in radian. Got it, Vaishnavi? So you have to put it here pi. Pi and pi will get cancelled out. So you will have mu naught I upon. हाँ 4r. ठीक है क्लियर है नाउ दिस इज फॉर द लोअर आर्क फॉर द अपर आर्क mu naught I upon 4 pi 2r because here the radius is 2r and angle would be same pi. So this will become mu naught I upon 8r. Now net अगर फील्ड की आप बात करोगे so b lower minus b upper. So this is just the half of mu naught I upon 4r. So net field that you will have is mu naught I upon 8r. अब मुझे आप ये बताओ कौन होशियार बच्चा है जो सबसे होशियार होगा वो मुझे बताएगा व्हाट इज द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इट गोइंग टू बी इनसाइड और आउटसाइड बताओ जो सबसे होशियार बच्चा होगा वो सबसे पहले बताएगा संजना वैष्णवी साक्षी महक बताओ भाई फील्ड नेट फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी अरे व्हाट हैपेंड गाइस व्हाट हैपेंड देखो सबसे पहले ये देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसी की डायरेक्शन उसी की तरफ डायरेक्शन भी डोमिनेट करेगी बी लोअर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी लोअर से फील्ड किस तरफ आ रही थी इनसाइड तो ये फील्ड किस तरफ आएगी इनसाइड आएगी नेट फील्ड क्लियर है ऐसे क्वेश्चन कर लोगे एवरीवन कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में कर लोगे ना
ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। ये भी एक सर्कुलर आर्क है नीचे, और ये भी, और ये दो लाइन चार्ज हैं। अब देखो पिछले केस में भी दो लाइन चार्ज थे वो, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले लाइन चार्ज थे ये। अब लाइन चार्ज से भी तो फील्ड आती है, बट ये पॉइंट क्या था, पॉइंट लाइन चार्ज वाली लाइन पे ही लाई कर गया। काफी लाइन हो गई ना। ये लाइन चार्ज भी खुद लाई कर रहा है, और मैंने बताया था जब भी पॉइंट उस लाइन चार्ज पे लाई कर जाएगा जिससे फील्ड आ रही है, वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये इसके अलाइनमेंट में आ रहा है, इसलिए इन दोनों लाइन चार्ज से फील्ड की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो। दैट इज व्हाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड देम। हियर आल्सो दे आर पुटिंग इन, the point is getting in the line of the line charge, so we will not consider the line charge, only the arc will be considered. The radius of this arc is 4r, and this is r. So you have to find out what is the value of magnetic field at point P. बहुत जल्दी बताओ भाई, ठीक है। And this is, I am writing the option here, mu naught I upon 4r, mu naught I upon 2r, बताओ भाई। साक्षी, वैष्णवी, महक, what is the answer? Try to solve this. Are you solving it, guys? Okay, I'll also start solving this. बी लोअर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, if you curl your finger in the direction of current, right hand, so what should be the direction? It is anti clockwise, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड कर्व करोगे फिंगर्स को, आउटसाइड, द फील्ड इज गोइंग आउटसाइड, एंड द अपर वन के कारण इनसाइड। So it is mu naught I upon 4 pi r. Angle would be pi. So it is mu naught I upon 4r. Okay, very good. Now B upper is mu naught I upon 4 pi 4r into pi. Pi से pi got cancelled. Mu naught I upon 16r. Now B upper is less than the B lower. You can see here. It is just divided by 4. It is divided by 16 4 times. So what you can do, B net is mu naught I upon 4r, you can take common. It will become 1 minus 1 upon 4. This will become 3 mu naught I upon 16r. And the direction would be in the
outside direction. B. So direction would always be according to the lower arc. ठीक है ना? From these two questions, what we have learned, the direction of net magnetic field will always be in the outward direction or inward direction decided by the lower arc. ठीक है? Clear? Now just move to the topic which is Ampere's circuital law. Okay. Now take out your notebook and just start noting it down. Now Ampere's circuital law, अब मैं आपको कहूंगा कि गॉस लॉ को थोड़ा आप रिवीजन करो. What is the Gauss law? Gauss law says that any arbitrary shape encloses some charges. So the flux through that particular surface would be flux enclosed is equals to the charge enclosed by that surface upon epsilon naught. With the help of this Gauss law, we are able to find out the electric field due to different shapes. But the problem with the Gauss law is that it is only applicable for the symmetric bodies. Applicable तो ये हर तरह की body पे है, either it is symmetric or asymmetric. But asymmetric ka you do not know the area, because finally you need the surface area of that body. So that is why I'm saying that it is easily applicable to symmetrical objects. Similarly, Ampere's circuital law will also applicable to the symmetrical, usefully applicable to the symmetrical subjects. ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स. अब देखो यहाँ पे Q1 and Q2 दो मेरे चार्जेस है, तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखूंगा, फाई enclosed is nothing but mu naught, sorry, Q1 plus Q2 upon epsilon. ठीक है, and with the help of that I will also able to find out the electric. Now same thing would be happening in the Ampere circuital law, but this is happening for the magnetic field. अब देखो, अब आप लोग ही बता दोगे क्या क्या होना है इसमें. Gauss law में we are dealing in the electrostatic, we are dealing the static charge. So that is why the charge encloses came here. Okay. Now, from the starting of this chapter, what we are dealing with? We are dealing with the moving charge. And moving charge is what? Can anyone tell in the chat box? What is the moving charge? What is specific name we can give that? I, current. Okay. Very good, Vaishnavi. Moving charge per unit time is nothing but the current. So which means we can somehow guess that Ampere circuital law में जैसे Gauss law में current in charge enclosed हो रहा था, similarly the Ampere circuital law is about current enclosed. Got it? Same way में I have told you in the beginning of the Biot-Savart law, when we are dealing with the similarities and differences, so we have seen that the magnetic field is a linear vector. बी डी डीएल के बारे से हमने बात किया था, आई डॉट डीएल पे डिपेंड कर रहा था, लीनियर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, नॉट द सरफेस. सो वी कैन से दैट कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एम्पियर सर्किटल लॉ पे, वो क्या होगी, लीनियर होगी. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इट जस्ट दी ऑल्टरनेट और वेरी इजी वे टू अप्लाई दी बायोट-सेवर्ट. ठीक है. Look, if this is the wire, if this is the current which is going through, this is the current in the wire. Now, what we have did, we have assumed a imaginary loop. Okay. Why we are doing this? If I just ask you about the direction of magnetic field due to this current, so what it should be? Put your finger in, put your thumb in the direction of current and curl your finger out.
So what is the shape that you are getting? Is it a loop na? No. Inside and outside, it is a different thing now. You can say. But if you just curl your finger, which type of shape you are getting? When you are curling your finger, which type of shape you are getting? Is it circular na? Loop type of. That is why we are considering here a imaginary loop. Now we have to understand step by step what a Ampere circuital law is. So here if you will see in this imaginary loop, okay, always the magnetic field will be tangential. Why? Because magnetic field is also a loop type here. Magnetic field is also a loop, and we have also considered a loop here already. Okay. So we can say that these magnetic field lines, we draw the tangent, so they will give the direction of magnetic field. So that is why the magnetic field in this loop is always tangential. Clear है सभी को? ठीक है. Now इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? एक बहुत छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे. बहुत छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे डीएल. अब ये डीएल कंसिडर कैसे करना है इसे भी सीख लो. करंट की डायरेक्शन से लूप बना, तो ये लूप जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, देखो ये लूप किस डायरेक्शन में है? ये कौन सी डायरेक्शन है? बताओ, देख करके बताओ. कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है. वेरी गुड साक्षी. So this is the anti-clockwise direction. So that is why the element that we have to choose is in the image, the is in the direction of loop. A loop is anti-clockwise sense. So the DL we will consider in the anti-clockwise sense. Now why we are doing this? Till we reach the conclusion, I have to tell you here. The statement of Ampere circuital law is very easy. That line integral of B dot dl is equals to mu naught times current enclosed. तो पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर शेप से what is the magnetic field, you can say just consider a imaginary loop around that. Whatever the value of current enclosed in that, this B dot dl depends on that. Okay, this is the statement. That is why we are considering a loop. We are considering the direction of B, and we are considering the current element dl. Okay, that is why we have considered it. तो ये वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है. नाउ this is the statement I have already told you. Surface integral of B dot dl is equals to mu naught times the current passing through the surface. Okay. So integral, closed integral है. Always remember this should be closed. B dot dl is equals to mu naught into I. अब देखो यहां से डायरेक्शन तो हम आसानी से बता ही सकते हैं. पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and curl your finger. That will be the direction of magnetic field. ठीक है. Now, is Ampere's law applicable to all the surface? Yes. Ampere's law is applicable to all types of surface, whatever the shape of surface is. Okay. But the easiness to implement this is only in the case of symmetrical object. Mark my word. एप्लीकेबल हर जगह है किसी भी शेप के लिए. जिस तरह से गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, हर एक शेप के लिए एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट यूजफुल. व्हाई? बिकॉज वी कैन ओनली अप्लाई फॉर द नॉन वैल्यूज ऑफ द एरियाज, नॉन वैल्यूज ऑफ द सरफेस एरियाज. इफ आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप, कैन एनीवन टेल? एनीवन? नहीं ना. एट द इंस्टेंट नहीं बता सकते ना. Then how you will operate your integration?
over the surface. Got it? Because in Gauss law, this is integration of surface. Like this is the surface. So what is the surface area of this? No one tell. ठीक है? सिम इसीलिए these two law is important but not useful. They are only useful in the case of symmetrical object, and not all the surfaces, not all the objects you will get in the practical life are symmetrical. Okay. Now, what are the key points to remember about applying the एम्पियर सर्किटल लॉ? ठीक है, हाउ टू, जिस तरह से हम उसमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, सिमिलरली हमें इसमें एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाना है, एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब वो एम्पीरियन लूप कैसा होगा? तो एम्पीरियन लूप आपको इस तरह से डिसाइड करना है कि एदर द बी इज टेंजेंशियल टू द लूप एज इज इन द फर्स्ट केस, ये लाइन चार्ज था, और यहाँ पे जो लूप लिया था हमने और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, इस लूप के टेंजेंशियल थी हमेशा। तो या तो ये कंडीशन हो, सेकंड इज या बी क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर हो, या फिर हमें लूप इस तरह से लेना चाहिए कि वहां पे बी हो ही ना। ठीक है, देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट दैट। तो अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, देन द एम्पियर सर्किटल लॉ इज वेरी यूजफुल फॉर यू, अदरवाइज यू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटीज। नाउ वी आर डूइंग इट फॉर द लाइन चार्ज। देखो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। अभी रिसेंटली हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, एंड वी कैन यूज द एक्सप्रेशन हियर ऑल्सो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब देखो फाई वन और फाई टू की वैल्यू फॉर दिस लूप वुड बी 90 डिग्री, so 90 and 90 sin this will become 2, so you will have 2 times of mu naught I upon 4 pi a, or you can write it as mu naught I upon 2 pi a, where a is the perpendicular distance of that particular point from the line charge or the current carrying wire. The same expression we are going to derive with the help of Amperian circuital law. देखो क्या करना है, ये अपने पास एक लाइन चार्ज हो गया, सॉरी करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इन दी अपर डायरेक्शन, ऐसे अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो लूप मेरा कैसे बना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, विच मीन्स मुझे जो एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करना है वो भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया। अब मुझे क्या कंसिडर करना है इसमें, एक छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल मैंने कंसिडर किया। अब अगर आप थोड़ा सा भी अटेंटिव हैं, जो कि आप हो, थोड़े से भी ज्यादा हो, तो आप बता सकते हैं कि डीएल वेक्टर और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, ड्यू टू दिस करंट देयर वुड बी अ फील्ड, तो डीएल और बी में, डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में व्हाट इज द एंगल, कैन एनीवन टेल? बताओ। साक्षी, वैष्णवी, देखो अगर आप बता नहीं पा रहे ना, अगर आप बता नहीं पा रहे तो यू आर डाउटफुल ऑन दैट, तो यू हैव टू आस्क। नो, नो, देर इज नो 90 डिग्री एंगल। वाई देर वुड बी 90 डिग्री? देखो इजीली समझो, इस लाइन चार्ट से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये तो दोनों सेम प्लेन में है। इस पॉइंट पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इनसाइड, करंट ऊपर जा रहा है, थंब रखो, फिंगर कर्ल करो, तो यहाँ पे मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो इनसाइड आई है, इफ दीज थ्री आर द एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी किस तरफ आई है, इनसाइड जेड एक्सिस। अब अगर इस एक्सिस को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, ये से, ध्यान से देखना वो,
सेम, सिमिलरली। ओके, अब यहां मैंने डीएल कंसिडर किया है, और डीएल भी किस तरफ है, इस वाली एक्सिस की तरफ ही तो है। ठीक है, ये ऐसा हो गया कि दो रिंग हैं आपस में, दो रिंग एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर रही है। ठीक है ना, ये भी तो इसी रिंग में है डीएल इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो वो भी तो ऐसे ही आ रही है बाहर की तरफ, और ये मेरा डीएल भी इसी तरफ आ रहा है। तो 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा बताओ। 0 डिग्री, ये मेरा लूप हो गया, यहां मैंने ये डीएल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये करंट था, अब ये करंट मैंने ऐसे दिखा दिया, देखो ऐसे। ठीक है, डॉट से करंट ऐसे आ रहा है। अब ऐसे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा, फिंगर को कर्ल किया। कर्ल करके मेरी फिंगर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यानी मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ है, इस तरफ है। और डीएल भी मेरा इसी तरफ हो गया, तो दोनों में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री हो गया। वेरी गुड महक, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी। तो दोनों में कितना एंगल हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों क्या हो गए, टेंजेंशियल हो गए। अब टेंजेंशियल होने से इसने हमारी वो कंडीशन तो फुलफिल कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो, या फिर परपेंडिकुलर हो, या फिर हो ही ना। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लूप लगाते हैं, रूल लगाते हैं, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज। अब इस लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया, जितना था सबका सब कर लिया। आई करंट था, आई करंट इनक्लोज किया, तो आई लिख देंगे आप। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वाई। अब बी क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस, क्योंकि करंट की वैल्यू भी यूनिफॉर्म है, इसलिए बी को हम आउटसाइड ले लेंगे। इट विल बी रिमेनिंग ओनली इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बताओ, डीएल एक छोटा सा एलिमेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब इन सारे एलिमेंट्स को, छोटे 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 सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ करके व्हाट इज द वैल्यू। अब जब आप सारे डीएल को जोड़ दोगे, so what you will be getting, if you add all the dl, what you are getting, the circumference of the circle। इस बात से सब एग्री है, बताओ। अगर मैं डीएल डीएल सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट को सम कर देता हूं, तो मुझे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ही तो मिलेगा। इस बात से सब एग्री करते हो। वैष्णवी महक, वैष्णवी तो करती है भाई, अच्छी बात है। साक्षी, व्हाट अबाउट यू। और सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैसे लिखते हैं हम, बताओ, कैसे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। 2 पाई आर, 2 पाई आर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। और उस फॉर्मूला से भी देखो आपको यही मिल रहा था। तीन फॉर्मूला से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो फॉर्मूला से देख, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लाइन चार्ज वाला। ठीक है, लाइन चार्ज से इस पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस आ गई, यहाँ पे एंगल वेंगल पता लग गया, तो उससे निकाल, इनफाइनाइट है दोनों में। तो म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन 4 पाई आर, ये कैंसिल, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक तो यहां से आ गया, एक ये एम्पियर सर्किटल लॉ से आ गया, दूसरा एक एक और जगह से आ सकता है, ये कहां से आएगा बताओ। अरे इन दोनों जगह से ही आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो फील्ड है सिलेंड्रिकल सिमिलैरिटीज, सिलेंड्रिकल सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे फील्ड लोगे वो भी ऐसे बनेगी, ऐसे 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 करते करते एक सिलेंडर आपको मिल जाएगा। ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है यहाँ। फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे क्या है, सर्कल के टेंजेंशियल है। ठीक है, सारे पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। द फील्ड एट एनी नॉन जीरो डिस्टेंस पॉइंट इन फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड
एंड इवन दो द करंट कैरिंग वायर इज इनफाइनाइट, चाहे करंट कैरिंग वायर मेरी इनफाइनाइट लंबी है, लेकिन मेरा जो फील्ड है नॉन जीरो डिस्टेंस के लिए क्या है, फाइनाइट वैल्यू रख। देखो फाइनाइट वैल्यू है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एक फाइनाइट वैल्यू तो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। सेकेंडली, अगर आप उस पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ा दोगे उस वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोलेनोइड के बारे में। अब सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड एक तरह का इक्विपमेंट है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज में लाते हैं। ये मैग्नेटिक एक्सिलरेटर भी हम इसे बोलते हैं, और बहुत सारे जो एक्सिलरेटर है, जहाँ पे हम पार्टिकल एक्सिलरेटर, भारत में भी 2 जगह पर है, जो पार्टिकल एक्सिलरेटर है उसमें हम सोलेनोइड और टोरॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, टू एक्सिलरेट द पार्टिकल। गॉट इट? एंड इन आने वाले टाइम में ना, वी आर डेवलपिंग सच ए टेक्नोलॉजी, वी विल डेवलप सच ए टेक्नोलॉजी in which the solenoid, the concept of bullet train is somehow related to the solenoidal plates, the magnetic fields. तो जो बुलेट ट्रेन आपकी बहुत ज्यादा फास्ट है ना, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो मैग्नेटिकली एक्सेलरेट होती है, और उसमें मैग्नेटिकली मैग्नेटिक लेविएशन टेक्निक का यूज हम करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन में ये जो आपकी ट्रेन होगी ना, ये ट्रैक से थोड़ा ऊपर रहेगी, लेविटेट करेगी एयर में, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। So that is why this train is able to move at a very fast speed. Got it? Now, this type of arrangement you can say it is a solenoid. Now I will tell you how a solenoid look like. देखो, आपने एक प्लास्टिक का पाइप लेना है। ठीक है, होलो पाइप होना चाहिए। आपने होलो पाइप ले लिया प्लास्टिक का। अब आपके पास कोई भी वायर हो, आप उस वायर को इस पाइप पर टर्न कराते जाएं। जैसे ही जैसे आप इसे वायर को टर्न कराओगे, तो यू विल गेट अ शेप लाइक दिस। ठीक है, इस तरह की कोयल बन जाएगी एक तरीके की। ठीक है, इसी कोयल को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। ठीक है, आपके घर में आप खाना पका, आपकी मम्मी अगर खाना पकाती है, बनाती होगी ओब्वियसली, तो वो एक इलेक्ट्रिक हीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपके वहां पे ये होगा या नहीं होगा, या यू हैव सीन इट और नॉट, बट हमारे एरिया में इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर। तो हीटर का कॉन्सेप्ट ही सोलेनोइड पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसकी वो भी एक तरह की ऐसी सर्कुलर कोइल्स होती है, स्प्रिंग की तरह। ठीक है ना, गॉट इट? आपने स्प्रिंग देखा है ना, टाइटली वाउंड स्प्रिंग देखा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग की जैसी शेप होती है सोलेनोइड। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप करा देगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जैसे ही हम उस वायर में करंट को फ्लो कराएंगे, तो करंट के कारण मूविंग चार्ज है करंट, तो मूविंग चार्ज से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आप देखो कैसे, ये आपकी वो मूविंग चार्ज, ये आपका वो है लाइन चार्ज है। ठीक है, आप आपकी वायर है जो आपने ऐसे कोयल की फॉर्म में इसके ऊपर रोटेट की हुई है, टर्न की हुई है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है जो बैटरी से कनेक्टेड है, जिससे इसमें फील्ड बन रही है। अब अगर आप फील्ड की डायरेक्शन भी देखो ना, तो आप भी ऐसे डायरेक्शन बता सकते हो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। देखो करंट ऐसे घूम रहा है अंदर, ऐसे ऐसे। अब अगर आप अपनी फिंगर घुमा दो करंट की डायरेक्शन में, अभी बताया था ना मैंने आपको, अगर करंट इस तरह से लूप में है, तो लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा दो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अब इस लूप में ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जैसे ही आप अपनी फिंगर को कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू विल गेट, आपका थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड यू कैन सी हियर, इनसाइड ऑफ इट इनसाइड ऑफ इट
that magnetic field is in this direction, linear in direction. You curl your finger, get the direction. ठीक है, इस तरह से। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये वायर्स है। जैसे ये मेरे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है। अब अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं, ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे कट कर दूं, हाफ हाफ कर दूं, तो मुझे ये कैसा दिखेगा? मुझे ये वायर्स ऐसे ही तो दिखेंगी एक साथ, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? बताओ, बताओ भाई, एनीवन? कैसे दिखेंगी वायर? ऐसे ही तो दिखेंगी। ठीक है, तो ये वो वायर है, इनसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, देखो ये इनटू द प्लेन हो गया, क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ से वापस, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऊपर की तरफ से ऐसे जा रहा है दूसरे सेक्शन में। तो ये इनटू द प्लेन हो गया, और ये आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर हो गया, करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? देखो इस तरह से है ये सेम चीज। यहाँ पे हम एक लूप कंसिडर करेंगे, एबीसीडी। एबीसीडी लूप कंसिडर करना है हमें, एम्पीरियन लूप। अब हम एबीसीडी में देखेंगे, वी विल मूव अकॉर्डिंग टू लाइन वाइज लाइन। पहले ए बी मूव करेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। एंड वी विल टेक कि ये जो करंट एलिमेंट भी हम इसी डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, नाउ आउटसाइड की जो फील्ड है अब बहुत कम होती है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं सोलेनोइड। इनसाइड की फील्ड को ही हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, वी विल ओनली फोकस ऑन द फील्ड इनसाइड। नाउ the field inside the solenoid is uniform, parallel, and strong, and along the axis of the solenoid. अब देखो, CD हमने लूप कंसिडर किया, CD, CD में हम इस तरफ गए तो हमारा करंट एलिमेंट भी इस तरफ हो गया। अब यहाँ पे तो फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं होने का, जीरो फील्ड आएगी। ठीक है, डीए की अगर आप बात करोगे, डीए में आपका करंट एलिमेंट तो नीचे की तरफ है और फील्ड आपकी इस तरफ है, तो करंट एलिमेंट और फील्ड में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री का। और वो होता है बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल मीन बी डीएल कोस थीटा। थीटा वुड बी 90, सो दिस विल बी आल्सो बिकम जीरो। सो डीए से भी आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? जीरो है। ठीक है, एबी की अगर बात करोगे, एबी में इसी तरफ आपका डीएल है, इसी तरफ आपकी क्या है? मैग्नेटिक। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, और वो क्या मिलेगी? बी इंटू एल। आपको यही तो करना था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। अब करंट इनक्लोज कितना है इसमें? जितने ये नंबर ऑफ वायर्स इसने कंसिडर किए हैं यहाँ पे। सपोज एक वायर से करंट आई था, तो एन वायर से कितना करंट होगा? एन टाइम्स ऑफ आई। सो सेम थिंग वी हैव डू इट हियर, वी हैव डन इट हियर। सो इट इज म्यू नॉट एन इंटू आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। So this is the value of magnetic field inside of the solenoid. ठीक है, और डायरेक्शन भी कैसे देनी है? राइट हैंड कंपास। So this is it for today guys. Any kind of doubt you can ask. अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। टीवी में भी हम इसका यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, और एम्पियर सर्किटल लॉ तो इसमें लगा ही सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑफ। ठीक है, ठीक है। So if anyone has any kind of doubt, you can ask. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive. Bye bye. Take care.